अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बच्चों के लिए फिर से एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं। जी हाँ, चिकन नूडल्स, वो भी नवाब्स किचन के स्टाइल में, एक इजी स्टाइल में। चलिए देखते हैं आसानी से हम लोग कैसे बनाते हैं। फर्स्ट हम लोग चिकन को फ्राई करेंगे। उसके लिए पहले हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन अच्छी तरह पकते वक्त इसमें हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। चिकन परफेक्टली फ्राई हो गया है, इसको हम लोग कढ़ाई से अलग कर देंगे। वाटर अच्छी तरह बॉईल होते वक्त इसमें हम लोग सॉल्ट भी ऐड करेंगे। नूडल्स में सॉफ्टनेस लाने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा तेल भी ऐड करेंगे, ऑयल।
चिकन के साथ साथ हम लोग एक भुर्जी भी बनाएंगे। उसके लिए पहले हम लोग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, एग मिक्सचर इसमें डालेंगे। अब हम लोग रेसिपी का मेन प्रोसेस शुरू करेंगे। उसके लिए भी पहले हम लोग ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम लोग चॉप्ड जिंजर और गार्लिक डालेंगे। नेक्स्ट इसमें थोड़े ग्रीन चिली ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चॉप्ड कैरेट। Next, chopped French beans. Next, finely sliced cabbage डालेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग स्लाइस्ड कैप्सिकम ऐड करेंगे। नेक्स्ट एक एक करके रेड और येलो बेल पेपर्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। नेक्स्ट रेड चिली सॉस, नेक्स्ट टमाटो केचप भी ऐड करेंगे। जो पहले ही हम लोग चिकन फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। चिकन नूडल्स कंप्लीट होने के लिए नूडल्स इसमें ऐड करने का ज़रूरी है, लेकिन इसमें जो मिक्स करने के लिए इजी रहने के लिए हम लोग थोड़ा ग्रेवी अलग से निकालेंगे। नेक्स्ट बॉइल्ड नूडल्स इसमें हम लोग अभी ऐड करेंगे।
नूडल्स अच्छी तरह मिक्स करे बाद इसमें हम लोग एग्स ऐड करेंगे। फाइनली इसको हम लोग स्प्रिंग ऑनियंस के साथ गार्निश करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है, बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज का ये वीडियो देख के आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एक शेयर करिए, उसके वजह से और भी बच्चे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। हम तक पहुंचने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए। तब तक के लिए नवाब्स किचन टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफ़िज़।